Yes, sir. Okay, and then we have started with one type of flip-flop that is called as, yes, RS. that is called as Set reset set flip flop. reset flip-flop, right? Or it is called as SR flip-flop. And once SR flip-flop we have completed, we have seen that whenever we are giving input to, whenever we are resetting, your output will become 0. Whenever you are setting, your output will become 1. And if both the inputs are, maybe if you are saying that 0, 0 without clock signal, right? Then what is happening? There is a race around condition which is not at all acceptable. And one last condition was called as no change condition. No change means what? Your output will not at all change. It will be same as it is in your previous state. Okay. And then what is the problem of SR flip-flop? Hello. Race What is the problem condition. of yes, race condition, right? So there was a problem of race condition in SR flip-flop. So hence we have moved towards a new type of flip-flop, and that was your JK flip-flop, right? So what is JK flip-flop? In JK flip-flop, it is same as your set reset flip-flop, but instead of your race around condition, right? There will be one more condition which will get included, and that is your, yes, that is which condition? Toggle condition, right? Means what? देखिए यहाँ पर whenever input j and k was 1 1 at that time, whenever input was 1 1 at that time, output was qn bar. What is qn bar? Can anyone tell me? Toggle. Huh? Toggle, sir. टॉगल राइट. मतलब अगर पिछले इनपुट में 1 था तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, राइट. एंड देन विद द हेल्प ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप, राइट, और विद द हेल्प ऑफ लेट अस से जेके फ्लिप फ्लॉप, वी हैव टू we had two flip flops, right? So one of them was delay flip flop. So in delay flip flop, what you are doing, you are just giving complement inputs to j and k. Okay. So what's happening, if you are giving 0 to the input, your output will be 0. If you are giving 1 to the input, your output will be 1. Then what is the use of this D flip flop? So it will introduce an delay between the input and output, right? And another flip flop was your T flip flop. So in T flip flop, we have seen that whenever T is equal to 0, then output will not change. And whenever T is equal to 1, your output will change. Output will change means what will happen? Your output will be opposite to the previous output. That is toggle condition, we can say. So T is toggle flip flop. Yes, no? Yes, sir. So Yes. yeah, we have seen the waveforms also in the previous lecture, correct? Yes, sir. ओके. सो देखिए क्या होता है ना कि डी फ्लिप फ्लॉप का जो एप्लीकेशन है वो है आपका शिफ्ट रजिस्टर. क्या बोलेंगे इसको? शिफ्ट रजिस्टर. सो शिफ्ट रजिस्टर मतलब आप बोले, मतलब यू कैन से इट इज अ पेन ड्राइव, राइट? इफ यू वांट टू स्टोर 4 bits of data, how many flip flop you will use? 4. Yes, 4, right? So like that, your this is the application of D flip flop, and for T flip flop the application is counter. If you want to count the number of clock pulses, then you can say it is your application of T flip flop, and that is your counter, correct? Yes, no? Yes, sir. Okay, okay. So, first of all, let us see what is shift register. Okay. So, shift register is what? Shift register is nothing but it is having basically two functions. एक होता है आपका data storage, दूसरा होता है आपका data movement. Correct? एक होता है आपका data storage, दूसरा होता है आपका data movement. Yes, Yes, sir. no? Okay, Yes. okay. So, Isn't that something? yes, so a register can consist of one or more flip-flops used to store and shift the data. Okay, so shift register are important flip-flop, mm, right? Configuration which are wide, having wide range of application. We can use it as communication, serial parallel communication, multi-bit number storage, sequencing, logical operation, and like that. Correct? Okay. So सुनिए,
Can you see the board? Yes. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now let us say that this is your memory element where we need to store data, 4 bits, right? So how many flip-flops you know need? Flip-flop number 1, 4. flip-flop number 2, flip-flop number 3, flip-flop number 4. Okay. Now सुनिए, अभी what we will do, we will give the input to first flip-flop. पहले का जो आउटपुट था वो दूसरे का इनपुट, पहले का जो दूसरे का जो आउटपुट था वो तीसरे का इनपुट, तीसरे का जो आउटपुट था वो फोर्थ का इनपुट, और फोर्थ का जो आउटपुट है वो आपका फाइनल आउटपुट है. सो दिस इज योर इनपुट, दिस इज योर आउटपुट. करेक्ट? यस, नो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. ओके. Yes, sir. now Sir, now students see. are in waiting room. Okay, just 1 second. So this is your input. Okay. Now a simple question I will ask कि आपको अगर 1101 ये डेटा इसमें this is 4 bit of data, right? Now you need to store this 4 bits. Hello. Yes, You sir. need to store this 4 bits in these 4 flip-flops, right? So how you will store the data? How you will store the data? Okay. So basically I can give a detailed circuit of this. Let us say this is your फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप. कौन सा फ्लिप फ्लॉप रहता है शिफ्ट रजिस्टर के लिए? कौन सा फ्लिप फ्लॉप रहेगा? D flip flop. Yes. So this is your D flip flop, this is your Q, right? Let us say this is flip flop number 1, correct? Okay. So let us say D1 Q1. Okay. And then this is going to another flip flop, this is going to another flip flop. Maybe you can say that this is your flip flop number 2. इसका जो इनपुट है वो क्या है आपका? D2. And what is the output? Q2. And then again I have third flip flop, maybe yellow color. Okay. And the third flip flop is nothing but D3. And उसका जो output था वो है आपका Q3. And let us say that I have 4 flip flop, that is your input is D4 and output is your Q4. Correct? Yes, no? Now इसको कुछ तो भी clock signal रहेगा ना, right? So let us say that I am giving a clock signal here. So which is this clock signal? Arrow है मतलब age triggered, positive or negative? Positive. Correct? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So now see D flip flop में पता है अगर इनपुट में 1 है तो आउटपुट में भी 1 आएगा, अगर इनपुट में 0 है तो आउटपुट में भी कितना आएगा? 0. 0 आएगा. ओके. अभी देखिए, हाँ, अभी let us suppose that this clock signal, let us suppose कि ये जो clock signal है, I will just draw some reference lines for my reference purpose, right? So these are the lines. And then this is let us say that this is your clock signal, this is your clock signal, and now this is your input signal, input, and then this is your output q1, sorry, q0 q1. Okay, q1 q2 बोला था क्या मैंने? Yes. So it is q1 q2 q3 q4. Okay. अभी देखिए क्लॉक सिग्नल अगर फॉलिंग एज है तो इनपुट कुछ भी रहने दो, आउटपुट क्या आएगा? हेलो, am I audible? Is it visible? 0. Falling edge. Yeah. Falling So edge. let us suppose कि हमारे पास जो आउटपुट है ना, पहला जो आउटपुट था वो मैं व्हाइट कलर से लिख रहा हूँ. सो लेट अस सपोज पहला आउटपुट जो था वो मेरा 0000 था. ओके. सो आउटपुट चेंज होने वाला है क्या? अगर क्लॉक सिग्नल ही प्रॉपर नहीं है तो नहीं चेंज होने वाला. ओके. अभी जी फ्लिप फ्लॉप काम कब करेगा? पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड पे, तो यहाँ पर काम करेगा. सो फ्लिप फ्लॉप को काम करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? पॉजिटिव क्लॉक पल्सेस देने पड़ेंगे. समझ में आ रहा है? ओके. अभी इनपुट क्या देना है मुझे? 1101 देना है. ओके. तो सबसे पहले कौन जाएगा? इनपुट में 1 जाएगा. सो इनपुट देखिए, पहले 1 देना है, बराबर है. उसके बाद में ये क्या देना है? 0 पास करना है. उसके बाद में क्या पास करेंगे हम लोग? उसके बाद में ये 1 पास करेंगे.
and finally again we will pass this one. समझ में आ रहा है? Yes, no? So this is Yes. पहला नंबर, दूसरा नंबर, इसका तीसरा और दूसरा राइट फोर्थ नंबर. ओके, अभी देखिए हाँ, जब मैं क्लॉक सिग्नल दूंगा राइट, तो पास क्या करना है, पास मुझे अभी पहले 1 करेंगे. ओके, तो देखिए D1 का इनपुट क्या है अभी, 1. D2 का इनपुट क्या है, Q1 is nothing but input of D2, करेक्ट. Yes, sir. D3 Yes, का sir. इनपुट क्या है, 0. D4 का इनपुट क्या है, 0. अभी देखिए जैसे ही मैं क्लॉक सिग्नल देता हूं वैसे क्या होगा, इनपुट में 1 है तो आउटपुट में क्या आएगा, बोलिए 0. बोलिए. 0. नहीं, यहाँ पर 1 इनपुट आएगा. 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा. इसके इनपुट में क्या था पहले, 0 था तो ये क्या रहेगा, 0 ही रहेगा. इसके इनपुट में पहले 0 था तो ये 0 ही रहेगा. इसके इनपुट में पहले 0 था तो ये 0 ही रहेगा. मतलब कैन आई से इट लाइक ओके, पहले इनपुट सिग्नल मैंने दे दिया, इनपुट सिग्नल यहाँ से चालू होगा. ओके, इनपुट सिग्नल है तो इनपुट तो मैंने दे दिया है, यहाँ से मुझे पास क्या करवाना है इनपुट में, 1 0 1 1, करेक्ट. ओके, तो पहला जो इनपुट था वो यहाँ पर गया, ये यहाँ पर गया, ये यहाँ पर गया, ये यहाँ पर गया, करेक्ट. यस नो? Yes, ओके, sir. अभी देखिए नेक्स्ट इनपुट क्या है आपका, 0 है. तो अभी इनपुट क्या है, 0 है. जैसे ही मैं क्लॉक सिग्नल दूंगा तो अभी देखो पहला इनपुट यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर क्या आएगा, अभी 0. ये 0 हो जाएगा. ये 1 था पहले तो ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 1. ये 1 हो जाएगा. ये 0 था तो ये 0 ही रहेगा, 0. ये 1 था तो ये 0 ही रहेगा. मतलब देखिए ये 0 यहाँ पर गया, ये 1 यहाँ पर गया, ये 0 यहाँ पर गया, ये 0 यहाँ पर गया. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. फिर उसके बाद में 1 देना है तो ये 1 हो गया तो इसके आउटपुट में क्या आएगा, ये 1 यहाँ पर 1. आएगा. इसका Q2 क्या आएगा, Q2 का इनपुट Q1 का आउटपुट होता है. तो 0 था तो 0 0. आएगा, 1 था तो 1 आएगा, 0 था तो 0 ही रहेगा. उसके बाद में फाइनली ये 1 जब देंगे तो क्या होगा, ये 1 होगा, ये 1 यहाँ पर आ गया, ये 0 यहाँ पर आ गया, ये 1 यहाँ पर आ गया. नाउ इफ यू सी द स्टेट राइट, तो फाइनली देखिए यहाँ पर क्या स्टोर हो गया, यहाँ पर क्या स्टोर हो गया, 1. यहाँ पर क्या स्टोर हो गया, 0. यहाँ पर क्या स्टोर हो गया, 1. यहाँ पर क्या स्टोर हो गया, 1. खत्म. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. Yes, sir. तो देखिए मुझे अगर 4 बिट स्टोर करने हैं तो कितने क्लॉक सिग्नल्स लगे मुझे, 3. हाँ 4 क्लॉक सिग्नल्स लगे ना, Yes, बराबर. sir. ओके, Yes, तो sir. सुनिए, for storing n bit of data I require n clock pulses. For storing n bit of data I require n clock pulses, correct? Okay, yes, no? Yes, sir. Now whenever you are giving the input, you are giving the input one by one, right? Okay, तो इस ऐसे वाले इनपुट को we will call it as serial input, right? SI. एंड जो आउटपुट है राइट, उसको क्या बोलेंगे, सीरियल आउटपुट. अगर आपको आउटपुट भी निकालना है तो फिर इसमें बिट्स अंदर देते जाओ. ये आउटपुट पहले 1 निकलेगा बाहर, फिर 0 निकलेगा, फिर 1 निकलेगा, फिर 1 निकलेगा, सीक्वेंस से ही जाएगा ना, करेक्ट. तो इसको बोलेंगे सीरियल आउटपुट. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So this is your SISO system, serial input serial output, SISO system. Yes, yes, no? Yes, sir. Okay, so there are 4 types of flip-flops available. Okay, so I will just go to the PPT and then I can show it here, that whenever serial communication, it provides binary number such as sequence of binary bits, right? So एक बाय one हमें अगर sequence पास करना है तो हमें flip flop ही लगेंगे, उसमें shift register ही लगेंगे, correct? Yes, no? Now Yes, sir. इस केस में अगर आपको है ना एक बार स्टोर होने के बाद में, डेटा स्टोर होने के बाद आप बोलेंगे सर मुझे है ना पूरा का पूरा आउटपुट चाहिए एक ही बार, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ से एक आउटपुट लीजिए, 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 राइट. सो यहाँ पर आएगा 1 1 0 1, एक ही टाइम में आपको आउटपुट आ रहा है, लेकिन
आउटपुट जा रहा है सीरियली, सो दिस इज कॉल्ड एज सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। क्या बोलेंगे इसको? सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। ओके, सिमिलरली आप बोलेंगे सर हमें ना इनपुट भी सब एक साथ देने हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, इसको पहला इनपुट दो, इसको पहला इनपुट दो, इसको पहला इनपुट दो, इसको पहला इनपुट दो, राइट? सो दिस इज पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर. So we can classify it as serial input serial output shift register, serial input parallel output shift register, parallel input parallel output shift register, parallel input serial output shift register, correct? So these are the four types of shift registers, right? And here let us say these are the applications, right? So shift registers are the device that stores and moves the data in a serial fashion. जो आपको मैंने explanation दिया है white board पे, right? So that is not means इतना आपको डिटेल में नहीं है, but yes you have to understand the concept why we are studying this shift register, correct? Yes. Yes, sir. So first of all, serial registers are device that stores and moves the data bit in serial fashion. ये समझ में आया आपको? सीरियली मूव हो रहा है, जो एग्जांपल मैंने दिया Yes, sir. है ना? Yes, sir. पैरेलल फैशन में क्या होता है, सबको एक साथ इनपुट दे दो, एक साथ आउटपुट ले लीजिए, पैरेलल फैशन। और कॉम्बिनेशन में क्या, एक तो सीरियली इनपुट दे दो, पैरेलली आउटपुट ले लो, सो ये हो गया दिस. सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन डिवाइड द डेटा ट्रांसफर मेथड्स और मोड्स इन फोर टाइप, एज आई हैव टोल्ड यू. पहले आपका सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट समझ में आया? Yes, sir. Yes, उसके sir. बाद में सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट. ओके, सीरियल इनपुट पैरेलल इनपुट, Yes, sir. पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट, करेक्ट? यस नो? Yes, sir. अभी Yes, सुनिए, sir. हाँ, अभी सबसे इजी एग्जांपल हमने पहले क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा सीरियल इनपुट. इनपुट के लिए कितने क्लॉक पल्स लगेंगे? अगर 4 बिट डेटा है तो 4 क्लॉक पल्स. आउटपुट अगर निकालना है तो 3 क्लॉक पल्स. सो टोटल क्लॉक पल्सेस रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा इज 2 into 4 minus 1, मतलब क्या, 7 क्लॉक पल्सेस हमें लगेंगे. समझ में आया? देखो, Yes, क्लॉक sir. पल्सेस मतलब सिंपल है कि आपका डेटा पैरेलल है, आपको आउटपुट चाहिए, तो फ्लिप फ्लॉप चेंज कब होगा इसका स्टेट? जब हम उसको क्लॉक सिग्नल देंगे तब. तो एक ही क्लॉक सिग्नल में जो कुछ इनपुट है वो बाहर चले जाएगा. सो ओनली वन क्लॉक सिग्नल इज रिक्वायर्ड फॉर पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर. यस यस. Yes, sir. Yes, sir. पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट में कितने n क्लॉक पल्स लगेंगे, और सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट में भी n क्लॉक पल्स लगेंगे. ओके, एटलीस्ट इनपुट डालने के लिए, नहीं तो आउटपुट निकालने के लिए जितना बिट डेटा है उतना तो भी क्लॉक पल्सेस हमें चाहिए, करेक्ट? यस. Yes. ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर जो हमने बताया वो, राइट? सो इसको हम फिर से दोबारा देख सकते हैं. हमें इनपुट देना है 101. ओके, सो बोलिए, ये आपका Q1 हो गया, ये Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3, राइट? आपको देना है इनपुट 101. तो पहला क्लॉक पल्स गया, तो Q1 का इनपुट क्या था? 1, तो ये 1 यहाँ पर आ गया. लेटेस्ट सपोज यहाँ पर कुछ तो भी इनपुट था, क्या क्या अज्यूम करेंगे? आउटपुट पहले 0 0 0 Zero. तो ये 0 यहाँ पर गया, ये 0 यहाँ पर गया. उसके बाद में ये 0 यहाँ पर जाएगा, ये 1 यहाँ पर जाएगा, ये 0 यहाँ पर जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में आएगा, ये 1 यहाँ पर आएगा, ये 0 एज इट इज, एंड दिस इज 1. सो 101 आपका स्टोर हो गया. अगर आपको ये 101 स्टोर निकालना है तो फिर से 0 0 दे दीजिए, राइट? तो 0 0 0, तो ये 101 बाहर निकल जाएगा. समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. So same thing I am explaining one more time. Okay, now this is serial input parallel output. सेम वही डायग्राम है, सिर्फ हमने क्या किया है कि पहले जो आपका Q0 Q1 Q2 था वो आपने यहाँ पर आउटपुट आ गया. मतलब देखिए, आपने n क्लॉक पल्सेस मतलब 3 क्लॉक पल्सेस यूज करके यहाँ पर 101 स्टोर कर दिया, और ये 101 तो मैं यहाँ पर सीधा ले रहा हूँ, ऑब्जर्व कर सक रहा हूँ. सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर, करेक्ट?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. Similarly, this is an explanatory diagram of parallel input, serial output. Sorry, parallel input, parallel output. एक ही बार सब इनपुट दे दो, बराबर है, एक ही बार सब इनपुट दे दो और एक ही बार सब आउटपुट दे दो, इसमें सिर्फ क्लॉक सिग्नल एक ही रहेगा। मतलब ये सिर्फ क्या है कि सब जो लेट अस सपोज आपके पास चार शिफ्ट तीन शिफ्ट रजिस्टर्स है, तीनों का इनपुट सेपरेट दे दीजिए। सो दिस इज अ पैरेलल इनपुट सिस्टम एंड तीनों का आउटपुट एक ही क्लॉक पल्स तीनों को अटैच है, राइट। दिस इज अटैच्ड हियर एंड दिस इज अटैच्ड हियर। तो यहाँ पर आपने क्लॉक पल्स जैसे प्रेस किया वैसे ये इनपुट यहाँ पर आ गया, ये इनपुट यहाँ पर आ गया, ये इनपुट और यहाँ पर आ गया। सो इट इज टेकिंग पैरेलल इनपुट्स एंड इट इज गिविंग पैरेलल आउटपुट, हेंस वी कैन कॉल इट एज पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर, करेक्ट? यस, Yes, sir. okay. And last one is your parallel input serial output shift register. So if you want to give the input parallelly, right, and if you want to take the output serially, then what you need to do, you need to have some logic circuit, right? So here we are just giving OR gate circuit, but yes, depending on your application you can apply more or less logic and you can give the inputs. Okay, so here you are here let us say that we are trying to give the inputs parallelly and we are trying to take the output serially, correct? Yes, sir. So now universal shift resistors, right, that is, you know, that can be configured in variety of modes, right? For example, हम ऐसा एक shift resistor लेंगे और उसको we can make it to work as SISO, SIPO, PISO and PIPO, okay? उसको universal बोलेंगे, समझ में आया? Yes, Yes? sir. Okay. Like for example, we can take a non-technical example, right? For example, you are having a cell phone, okay? So let us say that before 7 or 8 years, right? Maybe there were some cell phones some cell phones were very good for music, some cell phones were very good for camera purpose, some cell phones were very good for gaming, some cell phones were very good for let us say that surfing, browsing, okay? But nowadays there is a cell phone which do all the things very in a very good fashion, correct? Yes, no? Yes, sir. So like that, you know, if you want to use all the modes of the shift register according to your requirement, then there is a universal shift register, okay? And it is having 4 modes of operation. Yes. So what is the contributions of IC technology, right? जैसे हमने गेट्स वगैरह पढ़े हैं, उसके बाद में शिफ्ट रजिस्टर देखे, एडर देखा, तो यू नो व्हाट आर द यूज ऑफ इट? सो सबसे सिंपल बात है, ओके? सो लेट अस से दैट यू आर हैविंग अ पल्स, ओके? और पल्स का टाइम पीरियड है, एक जो साइकिल है उसका टाइम पीरियड है 1 सेकेंड, ओके? सो कैन यू प्रिपेयर अ डिजिटल क्लॉक आउट ऑफ इट बाय यूजिंग काउंटर? यस। सो it is basically the most widely used example is timer circuits, right, where we can count the circuit, we can count the clock signals, right? We can count the clock signals with the help of the counter, and which is made up of shift resistors, correct? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Second thing, pen drives, or we can say memories, है ना? Without memory, can you imagine your laptop or desktop or your cell phone? No, right? No. After that, yeah, after that, microprocessors and microcontroller. Why microprocessor and microcontroller? Because inside microprocessor, what is present? There is adder, subtractor, right, multiplier, then all the logic operations, right, will happen inside the logical operators will be present inside the microprocessor or controller. Also, you know what is microprocessor? Pentium 5, is it a processor? Yes, sir. Or Core 2 Duo, is it a processor? Yes, sir. Yes. i7, is it a processor? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So what this processor is having? Is it having its RAM? No, sir. Is it having its ROM? Yes, sir. No. Yes, yes, right.
So it will have some permanent memory where some of the programs will be stored, right? For example, you know, when if you don't have hard disk, still your PC will start, isn't it? And it will Yes. search for the operating system which is stored in the hard disk. बराबर है? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. Yes. okay. Okay, anyway, after that, do you know the clock frequency is 3.5 megahertz, gigahertz, जो कुछ आप लेते हो. So it is having a clock. So microprocessor, due to this IC technology, microprocessors are existing. We are having computers because of this thing, timers, memory, correct? मेमोरी मीन्स Yes, Yes, sir. sir. आप ROM बोल रहे हो, रीड ओनली मेमोरी, राइट? और RAM बोल रहे हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी. So finally it is memory. Memory means what? It will store the data, correct? Yes, sir. So how we can store the data? By using the flip-flops, right? So and embedded systems, right? So that is a contribution of this technology. Now what is microprocessor? Now I guess you can tell me better than this, right? So microprocessor system consists of following elements, right? So now I expect that this should be a discussion session where you can tell what is ALU full form. Arithmetic logic unit. Arithmetic unit. Okay, what it will do? Arithmetic and logical operation. Operations, sir. Good, good. Operations. So arithmetic operations अगर करेगा तो adder एक operation है उसमें adding two numbers. Yes. Yes, sir. Can we use for adding? Can we use the adder circuit which we have just learned? Yes, sir. Yes, Yes, sir. correct. So this is where we can use our IC systems, right? Okay. Second is your let us say control unit, right? What is control unit? Yes. What is your control unit? Hello. Am I Yes, audible? sir. Yes, Yeah, sir. what is control unit? So which controls all the हाँ, which implementation. अभी ALU है, Center. उसको एडिशन हाँ, कब करना है, सब्ट्रैक्शन कब करना है, कहाँ से डेटा उठाना है, कहाँ पर रखना है, तो उसके लिए हमें एक यूनिट लगेगा, that is your control unit, control right? unit. It will take care of all the timing circuits and all that. Lastly, Yes. register array. Register array means what? RAM, ROM, जो कुछ है वो, जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है, correct? Yes, And sir. you can Yes. interface memory unit with that, okay? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. तो इतना ही आपको CPU लेकर आ गए घर पे, खत्म, ऐसा काम होता है आपका? No, No, sir. sir. तो उसके साथ इनपुट डिवाइस चाहिए. इनपुट डिवाइस मीन्स आई एम टॉकिंग, सो माइक्रोफोन इज गिविंग इनपुट टू द CPU, करेक्ट? सो दैट इज वन ऑफ द इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड टाइप कर रहे हो तो CPU के अंदर इनपुट जा रहा है ना टाइप करने से. Yes, sir. Yes, So sir. that is input device. Mouse, that is input device. So and then there are some output devices. What are the output devices? Speaker हो गया आपका, LED Printer. हो गया, right? Printer हो गया, LED screen हो गया, right? So all these are your output devices, correct? So CPU is nothing but you can say it is very means it is fabricated in VLSI system, right? And it has instruction registers which holds all the instruction. मतलब program रहेगा ना, है ना? प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है. प्रोग्राम Yes, मतलब sir. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, करेक्ट? देन डिकोडर रहेगा कि लेट अस सपोज आपने कर दिया जावा में प्रोग्रामिंग, तो वो जो हार्डवेयर है उसको जावा थोड़ी समझता है. उसको क्या समझता है हार्डवेयर को? सिर्फ Binary वंस और language. जीरोस कनेक्ट है, राइट? वंस और जीरो समझते हैं, मतलब बाइनरी नहीं तो हेक्सा सिस्टम समझता है. तो वो जो डिकोडर रहेगा वो क्या करेगा कि मतलब जो कुछ इंस्ट्रक्शंस है, ओके, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके भेजेगा. Next is ALU, you know. Next are registers, you know, right? So memory, two types of memories are there, RAM and ROM. RAM is nothing but random access memory. Okay. So it is a volatile memory and it will, all the data will get erased whenever we are powering off or switching off the device. ROM, read only memory, it is like your hard disk, right? Where you can store the data for even if the power supply is gone, you can store the data. Correct? Yes. Yes, sir. एंड आईओ इंटरफेसेस, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, कैमरा, ये वो सब. ओके. सो ये आपका डायग्राम है कंप्यूटर सिस्टम का, राइट?
ALU है, flags है, register है, instruction unit है, PC है. So basically I can show you this is your microprocessor architecture. Okay, क्या करेगा इसमें accumulator? क्या करेगा accumulator? It will accumulate the data. Correct, it will store the temporary data. Next is your temporary register. Again, the function is to store the data. Okay, now सुनिए, accumulator में let us suppose आपको if you want to do some addition work, okay, so you will write in let us say some language. See, the accumulator में एक आपने variable denote किया और उसमें दे दिया 5, इसमें b और इसमें 8 दे दिया और बोला ALU को addition करो, तो बाहर में क्या आएगा आपका output? 5 plus 8 will be 13. Correct? Yes, no? Yes, sir. Yes, sir. सो 13 आ गया. अभी 13 आपको क्या करना है? सो 13 प्लस है माइनस है, तो उसके लिए यहाँ पर फ्लैग्स वगैरह कुछ दिए है, तो वहां पर आप उसका साइन चेंज कर सकते हो. सो यहाँ पर आप इसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइन चेंज कर सकते हो और फिर ये फिर से आप आउटपुट दे सकते हो. राइट? सो ये जो आउटपुट है, ओके, ये जो आउटपुट है, अगर किधर ये आपका मेमोरी है, यहाँ पर किधर स्टोर करना है, ये रजिस्टर्स है विच विल स्टोर द डेटा, तो यहाँ पर आप 13 स्टोर कर सकते हो. राइट? प्रोग्राम काउंटर आपका चल रहा है, प्रोग्राम काउंटर बता रहा है कि ओके आपने एडिशन करके स्टोर कर दिया है, अभी आगे जाओ, आगे बढ़ो. ओके, उसके बाद में फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको, दिस आर ऑल नथिंग बट द मेमोरी यूनिट वेयर दिस इज एड्रेस लाइन और एड्रेस बफर विच विल पॉइंट आउट टू व्हाट memory location we should store the data or from which memory location we should fetch the program and all that. Okay, and then this is serial input output control where you can fetch you can connect the serial or you can connect the keyboard, mouse or any input output peripherals. Right? Okay, and then what is remaining? This is your timing and control. जो control unit जो बोल रहा था मैं, heart. Right? So this is the heart of the CPU. Right? What this heart will do, it will generate the clock signal, then it will just give the clock signal, then it will read, write, right, what to do with the memory, right, whether we need to read the data from the memory or whether we need to write the data on the memory. Right? So all the things will be taken care by this control unit. Right? और नहीं तो फिर कहीं से इंटरप्ट आ गया तो फिर क्या करना है, ये सब कौन देखेगा? ये सब कंट्रोल यूनिट देखने वाला है. Right? So this is in a simple manner what is basic architecture of 8085. But yes, means a detailed architecture is not expected from you, but आपको just एक introduction दिया है कि 8085 जो माइक्रोप्रोसेसर रहता है उसमें क्या होता है. नाउ 8085 this is a microprocessor which can do as per our program can be bigger. Yes? Yes, समझ sir. में आया? Okay. Now this is microprocessor, all the what we can say units, so you can just see it. Okay, so maybe I can explain this registers. Right? Registers are what? Registers are nothing but, yes, shift registers हमने देखा ना अभी. It will store the data. तो कौन से data है आपके register है? B C D E H L. So all these are 8-bit register. इसका मतलब क्या है? कितना डेटा स्टोर कर सकता है एक रजिस्टर? 8 bit of data. राइट? तो दोनों का पेयर मिला के हम 16 बिट ऑफ डेटा पेयर स्टोर कर सकते हैं. करेक्ट? यस, नो? तो ये जो है ये जनरल पर्पस रजिस्टर है. दिस कैन होल्ड द टेम्पररी डेटा. राइट? यस, नो? एंड फ्रॉम वेयर द डेटा इज कमिंग? फ्रॉम द प्रोग्राम द डेटा इज कमिंग एंड वी कैन स्टोर द डेटा हियर. यस? Yes, sir. Yes, So sir. this will act like a Yes, RAM, sir. random access memory. And then there is an accumulator. It will store 8 bit of data. Also it will store the result of the operation which is performed by ALU. Okay, and then next is your flag register. Again it is a register. It will be storing the flags. Okay, flags means what? Maybe there are different types of flags are there. For example, मैंने आपको sign flag बताया कि आपका result positive है negative है, so that will be stored in this one bit sign flag. Zero है या non zero है, zero flag से पता चलेगा. Then carry है, parity है. Right? So all this will be in the flag registers. Correct? Zero flag, carry flag and all that. Okay, yes. Yes, sir. Yes, sir. And then there are some non-programmable registers.
Okay, and then there is clock generator. So maybe we can have a clock generator circuit which we will be providing. And then there is some memory. For accessing the memory we are having two buses, that is address bus and data bus. बस मतलब क्या है कि हम, आपने कभी पीसी अगर देखा होगा, सो देयर इज अ डेटा केबल, जैसे ग्रे कलर का केबल रहता है, उसमें काफी एट लाइंस रहते हैं, नहीं तो 16 लाइंस रहते हैं, एंड देन वी आर कनेक्टिंग. सो इट इज ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो दैट आर कॉल्ड एज योर बसेस. So like for example, you are connecting the bus from the CPU to the hard disk. Okay, so that is your bus. Okay, so some of the bus may carry address, some of the bus may carry data. So address क्या है, data क्या है, second year में आपको proper तरीके से समझेगा. Okay, so this is basically a microprocessor. Now what is the difference between microprocessor and microcontroller? So this is where you need to focus it. Okay, so left hand side में जो microprocessor का diagram है, इसमें timing circuit है, input है, output है, serial input है, RAM भी है और ROM भी है. Correct? Yes, no? Yes, sir. एक ही चिप पे आता है क्या या अलग अलग आता है? आपका सीपीयू एक ही मदरबोर्ड पे रहता है, बट एक ही आईसी में सब रहेगा या अलग अलग रहेगा? जैसे सीपीयू अलग Different, होगा, sir. राइट? रैम आपको डिफरेंट से इंसर्ट करना पड़ेगा, रोम आपको डिफरेंट से इंसर्ट करना पड़ेगा, कीबोर्ड अलग है, आउटपुट का अलग है, राइट? लेकिन माइक्रो कंट्रोलर ऐसा नहीं रहता है. माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है ना, माइक्रो कंट्रोलर में, राइट, रैम, रोम, टाइमर, सीपीयू, सीरियल इंटरफेस सब एक ही चिप में आएगा, उसका एक आईसी आ जाएगा. गेटिंग? यस. Yes, sir. तो जैसे माइक्रो कंट्रोलर डेडिकेटेड प्रोसेस के लिए आप यूज कर सकते हो. जैसे आपका वॉशिंग मशीन है, उसमें माइक्रो कंट्रोलर है क्या? प्रोग्राम करते हो आप वॉशिंग मशीन में, sir. है ना? एक बाय Yes. डिफॉल्ट प्रोग्राम होता है, वही लाइफ टाइम चलता है वॉशिंग मशीन के, है ना? लेकिन आपका Yes. जो, हाँ, लेकिन आपका जो लैपटॉप है, नेट डेस्कटॉप है, तो उसमें ऐसा नहीं होता है ना. यस, लैपटॉप डेस्कटॉप में आपको प्रोग्राम इंस्टॉल करके आप अनइंस्टॉल करके दूसरा भी इंस्टॉल कर सकते हो, उसको आप फंक्शनल बना सकते हो अकॉर्डिंग टू यू. लेकिन वॉशिंग मशीन को आप आपके हिसाब से प्रोग्राम सेट कर सकते हो क्या? देयर No, आर sir. ओनली, लेट अस से इन वॉशिंग मशीन देयर आर, लेट अस से 10 मोड्स गिवन. आपको कुछ तो भी 12th मोड चाहिए, है ना? क्या आपको क्या चाहिए? आपको पहले कपड़े गीले हैं उसको सुखाना है, और उसके बाद में भिगो के फिर से सुखाना है, राइट? तो उसका प्रोग्राम है ऑटोमेटिक में? No, sir. नहीं है, राइट? जो फिक्स प्रोग्राम है उसी मोड में हमें जाना पड़ेगा. हमारे दिमाग में अगर प्रोग्राम हमने ले लिया, तो वो प्रोग्राम हम नहीं कर सकते. पहले वॉशिंग, उसके बाद में सोकिंग नहीं होगा ना. पहले सोक होगा, बाद में वॉश होगा. जो सेट किया है कंपनी में, जो दिया है वही कर सकते हैं, है ना? ओके, so Yes, this is sir. the difference between the processor and microcontroller. Okay, so basically we can say that what are the difference between the microcontroller and processor. Yes, so processor, we can say it is not a complete computer because RAM, ROM are not part of its प्रोसेसर. करेक्ट? जैसे आपने आपका लैपटॉप ले लिया, नहीं सॉरी, आपका सीपीयू ले लिया. ओके, सो इट इज नॉट हैविंग रैम, रोम. whereas in microcontroller, right, RAM is present, ROM is present in build. Correct? Okay. Yes, sir. Advantages, or let us say what are advantages of microprocessor or microcontroller? Okay, application क्या होंगे बोलिए? एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होंगे माइक्रो कंट्रोलर के? क्रूज कंट्रोल में, यहाँ पर, वहां पर. करेक्ट? Yes, sir. एडवांटेजेस, can I say microcontrollers are cost effective? Yes, sir, because all are produced at once. Yeah, then program to execute specific task. माइक्रोकंट्रोलर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं. जैसे वॉशिंग मशीन है, कॉस्ट इफेक्टिव है ना. वॉशिंग मशीन के साथ में आपको कंप्यूटर थोड़ी लेना पड़ता है प्रोसेसर प्रोसेस करने के लिए. छोटा सा आएगा, कहीं तो भी बैठ जाएगा, उसका काम करते रहेगा जिंदगी भर. उसके समझ में आ रहा है?
माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? Yeah, sir. Right. sir. उसके बाद में फिर क्रूज कंट्रोल मोड आ गया कार में, तो वो भी तो एक कंट्रोलर ही है। तो क्रूज कंट्रोलर मोड आ गया तो फिर एक सीट पे हमने पीसी रख दिया, नहीं ना, उसका आईसी आता है, फिक्स प्रोग्राम रहता है, उसी हिसाब से चलता है, बराबर है ना? Yes, sir. Yes. है ना? क्रूज कंट्रोल में आप चेंज कर सकते हो, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, हाँ, कैन यू फाइट विथ टाटा? नहीं नहीं, क्रूज कंट्रोल में मुझे ऐसा नहीं चाहिए, है ना, थोड़ा अलग प्रोग्राम चाहिए, करके देगा आपको? नहीं, फिक्स है, ऐसा यूज करना है करो, नहीं तो फिर यू कैन गो फॉर अनदर चॉइस। यस, Yes, sir. है ना? Yes, sir. नहीं तो फिर क्रूज कंट्रोल में तो मतलब अगर हम प्रोग्राम करने लग जाएंगे तो फिर मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, लाइक यू कैन हैव ऑन योर ओन क्रूज कंट्रोल मोड, हम चेंज नहीं कर सकते, जो स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से वो प्रोग्राम सेट आता है एंड देन इट इज कंट्रोलिंग द व्हीकल। So this was the end of unit number 3, part B, that is digital electronics. Any problem in this? Yes, no? No, sir. No. Okay, okay. So let me stop presenting the screen, and I am again presenting the screen. Just see to its this video and we will stop. Can you listen to the sound? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Hello friends, welcome back to our channel Physics and Animation. Here in this video, we are going to talk about the basic principle and construction of an electrical transformer. What is an electrical transformer? Sometimes it becomes necessary to convert high alternating voltage to low alternating voltage or low alternating voltage to high alternating voltage. This is done with a device called transformer, which works on the principle of mutual induction. But why do we need transformers? The large-scale transmission and distribution of electrical energy over long distances is done with the use of transformers. Here we have two very basic equations of power and heat loss. In the equation of power, it is evident that if voltage increases, then current will decrease. And if the current decreases, heat loss will also decrease. If we want to transmit power P to a long range through a wire of some resistance R, in this case, it becomes necessary to transmit power at high voltage so that the current is lower. Lower the current, lower will be the heat loss, and efficient will be the power transmission. That's why we need a device called transformer, which can increase or decrease the voltage according to our need. Successful people perform 100 tasks a week. An average individual also performs. Basic construction of an electrical transformer. A transformer consists of two sets of insulated coils. One of the coils, called the primary coil, has Np turns. The other coil is called the secondary coil. It has Ns turns. Often the primary coil is the input coil and the secondary coil is the output coil of the transformer. Principle of working of transformer. Electrical transformer works on the principle of mutual induction. When an alternating voltage is applied to the primary coil, the resulting current produces an alternating magnetic flux, which links to the secondary coil and induces an EMF in it, which actually forces the free electrons of the secondary coil and therefore produces alternating current in the secondary coil. This phenomena is called electromagnetic induction and particularly known as mutual induction. As we can see in this animation, that the magnetic field lines of primary coil is not linking perfectly with the secondary coil. Therefore,
our energy of magnetic flux is getting wasted. That's why, for holding all the magnetic field lines produced by the primary coil and link it to the secondary coil, we use soft iron core. Transformer cores are usually made up of thin metal sheets stacked in. Okay, so yes, are you getting what is happening inside the transformer? Yes. Yes, sir. Okay. Yes, So sir. tomorrow we will start a new chapter called as transformer. Okay. So let me stop recording.